Hello, everyone. Hello, everyone. I would like to welcome you all to this tutorial session 8 on the topic of smart grid basics to advanced technologies. Before I start the topic, I would like to introduce myself. I'm Mohd Owais, Prime Minister Research Fellow, Department of Electrical Engineering, Aligarh Muslim University. I will be taking this tutorial session on 17th September 2024. In this session, what we are going to do, we are going to, to review to recap the last week's video lecture, which you have shown, which you have seen on the NPTEL website. Then we will solve some questions regarding this so that you will have a better understanding. So I will start with the first topic, where it's phasor measurement unit placement. Okay, so uh, what I will be doing here in this. Before this, I have the I have described about what is the PMU and why it is the more advantageous than other. Okay, but here what I will be doing here is that we will be deep diving on about the how uh, about the purpose of their placement, okay, and then why the optimal placement of a PMU is an important thing, why it is done. Then we will see the problem formulation and experimental results on in which the PMU has been placed on on various test cases. Then after that, I will be discussing about the classical and heuristic optimization techniques. Okay, so we will be moving on toward this. Okay, so now coming to back to the thing we are going to discuss. So what is next? Here, the introduction. As I have discussed about that, there is nowadays renewable energy are integrating in a larger quantities. Why they are going to? Because there has been a push for net zero economy. Various governments across the world are trying to curtail down or reduce their net zero targets. So their emission targets. So there are some net zero target which has been projected by several countries. So what they have done here in this for India particularly, India has an ambitious target of about 50% ambitious target of non-fossil fuel based renewable sources, about 300 gigawatt we have to achieve by 2030. So for achieving those, we will be integrating large number of solars, wind, and other non other renewable base. What the problem here is that when we integrate the renewable energy sources, they have intermittency, they have their uncertainty. The uncertainty will increase in the generation. And due to that uncertainty, what will happen here is that I will show it over here. Like, let me write it down over here.
So what will happen here is that due to integration of renewable based generations, what will happen here is that the uncertainty will increase. The reason behind is that, like for example, let's take a solar based, you know, renewable generation. If we take solar based distributed energy resource, if we take that, so it is highly dependent upon the sunlight. And we know that sunlight is not constant over any place. It varies place to place. So what happened here is that the solar irradiance will vary. Based on that, the production will be intermittent. Another thing, let's take another example of wind-based DER. Let's take wind-based DER. So what happens here is that I have derived the formula of wind. It is directly proportional to the swept area. Also on the wind speed, and we know that wind speed is not a constant thing. It varies depending upon the weather conditions. So these two are, you can say that they are very uncertain. They have a higher dependency on the weather conditions. So that's why the generation from these is also, very uncertain. So therefore, we have increased uncertainty in our generation if we increase the renewable energy penetration. Okay. Now the next thing here is this. What the next thing here is this. So you know to counter the uncertainty, there should be advanced monitoring and controlling methods होने चाहिए that helps in dealing these uncertainties. Okay, real time, real time informations होनी चाहिए from measurement devices, from measurement devices, which will help in what it will help in? It will help in estimating the states of power system, and after that any analysis if required we can easily perform that. So for performing these things we should have a real time information. The more, or we can say the better the information we have, more, so better the information we have, then better control and monitoring techniques we can apply. It will lead to what will be reliable power system. Okay. So therefore, the information which coming from the measurement devices should be what it should be. It should be much clear and much better. Okay. So there are various devices which measure these information. One of the devices, what it is phasor measurement units. I have already discussed in detail how the phasor is going to, why it is more effective than SCADA based measurement units. Okay.
because the sampling rate is high, and you can say they are also coordinated by GPS, so the accuracy, time based, information can also be calculated. So what comes here is this: what is the purpose of PMU placement? कि PMU प्लेसमेंट का क्या पर्पस है? ओके, ठीक है. So the purpose of the PMU placement is, the thing is that, to effectively gather better and more accurate data. और ये बात मैंने पहले भी बताई थी, PMU इज अ वेरी कॉस्टली आइटम. इट इज अ वेरी कॉस्टली आइटम. इसको हम हर जगह नहीं लगा सकते. तो दैट्स वाई इसकी इसको काफी, those places it has been placed where the critical, analysis, or we can say कि बहुत ज्यादा critical points हैं, वहां पे हम place करते हैं. So another thing is regarding the PMU placement is that it is restricted by the economic and infrastructure constraint. Okay, इनसे ये constraint रहता है. अब प्रायोरिटाइजेशन कहाँ करा जाता है? इट इज जनरली प्रायोरिटाइज कहाँ पे? जैसे मैंने कहा, क्रिटिकल बसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा लोड फ्लक्चुएशन, और उन बसेस जिनकी वजह से देयर आर हैपनिंग सेवरल आउटेजेस इन पास्ट, और जनरेटर बसेस, बिकॉज जनरेटर इज अ, वहां पे फॉल्ट होगा तो द आउटेज विल बी वेरी लार्ज. एंड टाई लाइन बसेस, they are all these points which are prioritized यहाँ पे for monitoring. इन places की monitoring जो है प्रायोरिटाइज रहती है. वी हैव टू कीप अ क्लोज आई ऑन दैट. अब रीजन क्या है कि हम हर जगह पे नहीं लगा सकते? तो व्हाट वी डू हियर, वी एनालाइज ऑप्टिमल प्लेसमेंट, कि मिनिमम नंबर ऑफ पीएमयूज लगाए जाए जिससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, जिसको हम कहेंगे ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ प्लेसमेंट ऑफ PMU. Okay, this we can do here over there. Okay, now in this optimized way of placement of AMU, what happened here is that it will help in, ये क्या करेगा कि ऑप्टिमाइजेशन करेगा, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ PMUs कम लगे, और information what we gather here is large, so that we can estimate the states of power system. मैं मैं ऑडिबल हूं तो चैट में लिख देना, ठीक है? रविंदर, okay. Now this is how we can say that the optimal placement of PMU is very much important. इसी वजह से ये काफी important है.
अब एक इसका प्लेसमेंट का मॉडल होता है। अब इसका प्लेसमेंट कैसे करा जाता है वो देखो। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेटवर्क डेटा लेंगे। क्या लेंगे, नेटवर्क डेटा लिया जाएगा, लाइक से कि लाइन रिएक्टेंसेस क्या है, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है, और नंबर ऑफ बसेस या नोड्स क्या क्या है, ठीक है। ये चीज हम इसके अंदर देखेंगे। देन व्हाट वी डू हियर इज दैट, फिर हम एक क्या करेंगे, एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का एक फॉर्म, ये सब कुछ एक मॉडल बनाएंगे, पीएमयू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है। ऑफ कोर्स हमारे पीएमयू इज अ कॉस्टली आइटम, तो वी हैव टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इसका प्लेसमेंट होगा, देन वी विल गेट द रिजल्ट्स, लोकेशंस मिलेंगे। ये तीन स्टेप में, दिस इज यू कैन से इनपुट स्टेज, दिस इज यू कैन से प्रोसेसिंग स्टेज, जहाँ पे सब एनालिसिस होगा। क्या कैसे होगा कि हम जो है नंबर ऑफ हर जो भी, लेट्स से लाइक यू हैव टेकन अ 14 बस सिस्टम, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे और इसको मैटलैब में प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर उसके बेस पे हम हर जगह लगा लगा के देखेंगे, एक पॉपुलेशन जनरेट करेंगे रैंडम नंबर ऑफ बसेस की, फिर हर जगह पे लगाएंगे और हम ये देखेंगे कि किस जगह पे हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज आ रहा है। उसके बेसिस पे हम, और सेवरल देयर आर आल्सो सेवरल डिफरेंट कंस्ट्रेंट we will apply, and observability constraint we will apply over here. So after applying all these constraints, we will print out the result. Okay, इसमें ये है, ठीक है। Now, okay, अब इसके बाद क्या करते हैं हम, स्टेट स्टेट एस्टिमेशन का क्या रहता है, स्टेट एस्टिमेशन एक्चुअली क्या बताता है, जो भी मेजर डेटा है माइनस जो डेटा हमें मिला हुआ है, एस्टिमेटेड डेटा जो हमने एस्टिमेट करा है और मेजर डेटा है, उसके बीच का एरर क्या है, वो हमको बताएगा कि हमारा स्टेट जो है कितने अच्छे तरीके से एस्टिमेट हो पाए हैं, नहीं हो पाए। इसका तुम एक रिजल्ट यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव हो गए। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये प्रपोज मेथड कहाँ लगाया गया, 14 बस पे लगाया गया। तो 14 बस पे लगाने के बाद देखो, एक पीएमयू यहाँ लगा गया, एक पीएमयू यहाँ प्लेस करा गया है, एक पीएमयू 9th बस पे प्लेस करा गया है ना, एक पीएमयू 7th बस पे प्लेस करा गया। ये कैसे प्लेस करे गए, ये उस एल्गोरिथम के अंदर निकालेंगे, तो फिर हमें ये निकल के आएगा 2 6 7 9, ठीक है। ये ऑप्टिमल लोकेशंस आई। ऐसे ही ये रिजल्ट जो है हमने कौन से बस पे लगाया, IEEE 30 बस सिस्टम। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड सिस्टम है। अगर आपको कोई रियल डेटा नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सिस्टम पे लगाते हैं और फिर ये देखते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस लगाई है, इट इज ओके और नॉट। तो यहाँ पे 30 बस सिस्टम में अगर हम देखें, तो 2 बस पे लगा हुआ है, 4 बस पे लगे हो एलोकेट करा गया है, 6 पे, 10 पे, 11 पे, 26 पे, 29 पे, 23, 18 एंड 12, ठीक है। दीज आर द पीएमयू लोकेशन। अब हमने क्या करा कि इसमें ये देखा, एरर निकाला बिटवीन द ऑप्टिमल फ्लो रिजल्ट एंड द स्टेट ऑप्टिमेशन मेजर्ड फॉर द बस फॉर वोल्टेज एंड लाइन फ्लो। तो हमने ये क्या दिया हुआ है, एब्सोलूट एरर दिया हुआ है, ठीक है। एब्सोलूट एरर है वोल्टेज एंगल एंड द लाइन फ्लो के लिए, ठीक है। तो IEEE बस नंबर बेस्ड है, जैसे 14 में लगाया तो इस पे ये तुम देख सकते हो, एरर है 2 × 10⁻³ पे, यानी कि डेसिमल के इस तरीके से 00 थर्ड प्लेस पर आ रहा है।
तो यू कैन सी हियर दैट द एरर इज वेरी लेस। और एरर है क्या? एरर मैंने बताया अभी, मेजर्ड एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस द मेजर्ड। इससे क्या पता चलता है, जो हमारा एस्टिमेशन है इट इज क्लोज टू द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो यानी जो हमने एल्गोरिथम जो एस्टिमेशन लगाया है इट इज क्वाइट रोबस्ट, इट कैन बी अप्लाइड ऑन अ प्रैक्टिकल सिस्टम ऑल्सो। अब देखो इसमें क्या है, अब है नेक्स्ट है, अब देखो ये चीजें जो हमने अभी ऑप्टिमल प्लेसमेंट करा पीएमयू का, ठीक है, बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक, कॉस्ट ऑब्जेक्टिव में क्या था हमारा कि एफ इज इक्वल टू समेशन कॉस्ट ऑफ पीएमयू, जो भी कॉस्ट होती है उसकी, मल्टीप्लाइड बाई यू आई। लेट्स से आई मल्टीप्लाइड इन बाई यू आई, और आई इज इक्वल टू 1 टू एन बी। अब क्या होगा, यू आई क्या है, यू आई एक बाइनरी वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी, 0 होगी या 1 होगी। 0 होगी कब, जब पीएमयू नॉट प्लेस्ड, और वी कैन से पीएमयू एब्सेंट। लेट से कोई भी बस है एन बी इज इक्वल टू 4 पे, पीएमयू नहीं लगा हुआ, तो वहां पे यू आई 0 हो जाएगा। अगर लगा हुआ है किसी बस पे तो पीएमयू प्रेजेंट, तो वहां पे वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी से हम जो है एस्टिमेशन, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब प्रॉब्लम थिंग क्या है, चीज क्या है कि इसमें बहुत सारी मेथड्स। रीजन क्या है, एक इनमें कन्वेंशनल मेथड्स है। कन्वेंशनल मेथड्स क्या होते हैं, जो कि मतलब कि आप जो है क्या करते हैं कि उसका एक्सप्रेशन लिख के उसमें वैल्यू, अलग अलग जगह की वैल्यू को पुट करते हैं, फिर उससे हम रिजल्ट्स जनरेट करते हैं, जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। एक होते हैं क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन, एक है ये क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन, जिसको मैं कहूंगा क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ठीक है, अब ये क्या टेक्निक्स होती हैं, दीज आर द टेक्निक्स, इनके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे बाइनरी, बाइनरी है आपका, और एक है लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्राम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है ये तुमने सुना ही होगा, कि इट इज अ मेथड टू सॉल्व एनी सिस्टम ऑफ अ लीनियर क्वांटिटीज, लीनियर इक्वलिटी। ठीक है, और इनइक्वलिटीज तो था, तुमने पढ़ा भी होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, इस तरीके की चीजों को सॉल्व करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारा पीएमयू का प्लेसमेंट है, इट इज अ वेरी हाई मैथमेटिकल ऑर्डर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर तो होता नहीं है। तो ये प्रोग्रामिंग जो है, ये प्रोग्रामिंग का जो मैथडोलॉजी है, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू अप्लाई ऑन द प्रैक्टिकल सिस्टम। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट वी हैव टू लीनियराइज द इक्वेशन, आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जब हम लीनियराइज करते हैं, देन वी हैव टू एज्यूम सेवरल थिंग्स, एजम्पशन लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकल के आता है वो प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं होता है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी रीजन ये होता है। लेकिन सबसे आसानी की क्या बात होती है क्लासिकल, मैं लिखूंगा क्लासिकल एल्गोरिथम्स की, कि ये इजियर टू इम्प्लीमेंट होती है, इजियर टू इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है, और सिंपल एल्गोरिथम होती हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लगा होता है उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, निकाल लेते हैं आंसर। ठीक है, बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट दे आर नॉट मेड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स लाइक पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में जैसे मान लो पावर फ्लो की इक्वेशंस होती हैं, दे आर हाईली नॉन लीनियर, तो इनको ये सॉल्व नहीं कर पाते। रीजन, उसके बाद प्रॉब्लम क्या, सॉल्व क्या नहीं कर पाते, दे गिव इन एक्यूरेट रिजल्ट, दे विल गिव रिजल्ट, बट दोज रिजल्ट वोंट बी, दोज रिजल्ट विल हैव अ लोअर एक्यूरेसी। तो इसी वजह से दो दूसरी टेक्निक्स आई, जिनको हम क्या कहते हैं, मेटा ह्यूरिस्टिक टेक्निक। ये आजकल बहुत चल रही है,
and they can be applied on the practical system and for solving a very complex thing. अब इसमें बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, जैसे जेनेटिक एल्गोरिथम है, पार्टिकल स्वार्म है, ठीक है, इसमें और है जया है, इसमें और बहुत सी एक हैं, काफ़ी सारी एल्गोरिथम है, जेली फिश है, ये आती रहती, ठीक है, बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं इनकी। दे हैव अ एडवांटेज ओवर क्लासिकल। क्या है एडवांटेज? दे कैन, you know, I would say here, complex problems can be solved using these algorithms, but they are not easier to implement. इनका implementation इतना आसान नहीं है जितना कि if you can see classical algorithms का है, ठीक, and they don't have tendency to stuck in local minima और मैक्सिमा, ठीक है। क्या होता है कि लोकल मिनिमा और मैक्सिमा में दे डोंट गेट स्टक। अनदर थिंग हियर इज दैट, अब देखो इसमें जो है बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, जैसे मैं कहूँ पार्टिकल स्वार्म एल्गोरिथम, इसके बारे में बात करें, ठीक। अब इसको सबसे पहले सजेस्ट करा था, ठीक है, कैनेडी एबन हार्ट, दो साइंटिस्ट थे, एबन हार्ट, ठीक है, इन 1995 के अराउंड था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दे हैव, यू नो, इसमें एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को, स्वार्म जिसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल स्वार्म होता है, जिनकी जो मूविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बेस पे ये एक एल्गोरिथम बनाई गई है। और इसमें जो है जो स्वार्म ऑफ, यू नो, जो स्वार्म है उसका, वो दो चीजों से गाइड किया जाता है। दे आर गाइडेड बाय टू फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या है? देयर पर्सनल एक्सपीरियंस और एन एक्सपीरियंस ऑफ द स्वार्म। स्वार्म में क्या होता है, अब स्वार्म को क्या कहते हैं, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें क्या होता है, जब हम एक तरीके से एक पॉपुलेशन जनरेट करेंगे जिसको हम कहेंगे स्वार्म, ठीक, फिर हम उन स्वार्म से ऑब्जेक्टिव फंक्शंस निकाला करेंगे, ठीक। देन आफ्टर कैलकुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वी विल, यू नो, अप्लाई सम कंस्ट्रेंट्स कि फीजिबल सॉल्यूशंस आए हैं नहीं आए, उसके बाद हम उसको अपडेट करेंगे, देन अगेन वी विल डू लाइक अनदर एल्गोरिथम, आई वुड से जे एल्गोरिथम, ओके। अब जे एल्गोरिथम में क्या है, इसमें क्या होता है, एक पॉपुलेशन जनरेट करी जाती है, लेट्स से x1 x2 x3, दिस इज, यू नो, x1 एंड xmn लिख लीजिए, ठीक है। तो ये जाता है xn1, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक चला जाता है xm1 xm2, इस तरीके से xmn, ठीक। तो ये क्या है, एक पॉपुलेशन जनरेट हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वी विल calculate, like here we have what we are going to consider, we are going to consider the cost, so we will cost like in PMU, so we will calculate the implementation of cost at every locations which is, और ये swarm है क्या, these are the locations where we are going to place PMU, ठीक। Then after that, what we will do here is this. Then after that, we will calculate the objective function for each of this row. Then we will check whether the cost objective different locations के लिए different cost आएगी। तो हम ये देखेंगे, our aim here is to minimize, उन locations पे लगाना है जहाँ cost of PMU is minimized. तो based on that, we will
filter down to those locations which have the minimized cost. Like say we have to place 3, तो 3 locations हम निकाल लेंगे. देन आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, जब ये 3 लोकेशन निकल जाएंगी तो ये हो जाएंगी हमारी मिनिमम वैल्यूज. फिर उसके बाद इसको अपडेट करेंगे, न्यू पॉपुलेशन बनाएंगे. न्यू पॉपुलेशन कैसे बनाएंगे, पुरानी पॉपुलेशन होगी, ओल्ड पॉपुलेशन प्लस दो एक रैंडम नंबर से आते हैं R1 एंड R2, उसका मल्टीप्लीकेशन होगा x माइनस एक्स मिन. इस तरीके से एक इक्वेशन होगी जिसको हम कहेंगे पॉपुलेशन अपडेट. ठीक, इसके बाद एक नई पॉपुलेशन जनरेट हो जाएगी हर इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ जनरेट करी थी तो फिर यहाँ जनरेट हो जाएगी एक और पॉपुलेशन. फिर इसको हम फिर वही सेम प्रोसीजर, और इसको फिर क्या करेंगे हम, टॉलरेंस, जब तक हमारा टॉलरेंस जो है 10⁻⁻5, यानी टॉलरेंस कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड. जैसे ही टॉलरेंस 10⁻⁻, ये वैल्यू हम खुद सेट कर सकते हैं. ये वैल्यू हम इसलिए 10⁻⁻ जनरली यूज करी जाती है क्योंकि इसके बाद क्या होता है, वैल्यू जो है सेकंड डिजिट ऑफ डेसिमल प्लेस पे चेंज होती है, तो हम कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा हाई वो नहीं देख रहे, बट ठीक है हमारा जो आ गया वैल्यू, इसके बेस पे हम फाइनली आंसर्स प्रिंट आउट कर लेंगे. तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन सी हेयर, लाइक से ये मैंने बता दिया. एडवांटेजेस वी हैव ऑलरेडी कवर, लॉन्ग एग्जीक्यूशन टाइम्स होता है इनका, ठीक है. अब सी, अब यही के इतने सारे टेस्ट केस सिस्टम्स में हमने लगाया है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ पीएमयूज लगाए जाए, ठीक है. और कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीएमयू, 2 पीएमयू लगाएंगे तो कम कॉस्ट आएगी 4 पीएमयू से. तो हमने ये देखा कि I14 में 3 पीएमयू लगाएंगे, इतने ऑप्टिमल पीएमयू हम लगाएंगे जिससे हमारा स्टेट एस्टिमेशन जो है बेहतरीन रहेगा. 30 पे 7 लगाएंगे, 39 पे 8 लगाएंगे, 57 पे 11 और 1118 बस पे 28 पीएमयू हम अप्लाई करेंगे. ठीक, अब देखो सी, IEEE 57 पे अगर PSU लगाते हैं, PSO लगाते हैं तो हमें 11 पीएमयू लगाने होते हैं. डुअल सर्च लगाते हैं, इंटीग्रल प्रोग्रामिंग लगाते हैं, हमें 12 लगाने होते हैं. सर्च ट्री लगाते हैं तो 11 लगाने होते हैं. तो हम इसमें तुम ये देख सकते हो कि सबसे कम नंबर ऑफ पीएमयूज आ रहे हैं, अगर देखा जाए बेहतरीन अच्छा रिजल्ट जो पीएसयू के आ रहे हैं. तो इससे क्या पता चलेगा, पीएसओ, सर्च ट्री, इम्यूनिटी, जीए, कंस्ट्रेन और जनरलाइज इंटीजर प्रोग्रामिंग लेना, ये सब जो है क्या दे रहे हैं, लेसन नंबर ऑफ पीएमयूज बाय इन कंपैरिजन टू अदर. तो दीज आर, है ना, यू कैन से हियर कि इनके जो रिजल्ट्स होते हैं दे आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव. ओके, सो आफ्टर दिस विल गिव यू एन आइडिया कि हम पीएमयू किस तरीके से लगाएं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. ये एक बेसिक आइडिया मैंने तुम्हें बता दिया कि पीएमयू का प्लेसमेंट मिनिमम क्यों करते हैं, क्योंकि व्हाई, बिकॉज पीएमयू इज अ वेरी कॉस्टली थिंग एंड वी हैव टू, यू नो, we have to minimize its cost. Okay, and after that we can also say कि PMU placement से क्या होता है, ये मैंने पहले ही बता रखा है. PMU has a certain edge over SCADA. PMU को जो इंफॉर्मेशन आती है, it is more higher, more in accuracy in comparison to SCADA. So now we are going to the next topic, okay, which is cyber security. Cyber security and resilience. अब जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी, वी आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, कि ये जो पूरा सिस्टम है, वी आर व्हाट कोर्स वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग स्मार्ट ग्रिड. क्या हम पढ़ रहे हैं, स्मार्ट ग्रिड. स्मार्ट ग्रिड का मतलब क्या है, डिजिटलाइजेशन ऑफ ग्रिड. सो दैट इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक कंट्रोल्स और टेक्निक्स हम लगा सकते हैं. तो उसके लिए शुरुआत में मैंने बताया, इट यूजेस आईपी प्रोटोकॉल. अगर हमें कोई कम्युनिकेशन करना है, ये सब करना है, ये सब चीजें हैं, तो ये सब क्या होता है, एक आईपी प्रोटोकॉल पे चलता है, ओवर द इंटरनेट चलेगा. ठीक है, ओवर इंटरनेट और ओवर द इथरनेट, वट एवर इट इज,
तो इसमें क्या होता है, अब हमको पता है कि जब कोई भी चीज इंटरनेट पे चलती है, इट हैज अ सेवरल, यू नो, इट हैज अ सेवरल थ्रेट फ्रॉम साइबर, इट हैज अ सेवरल थ्रेट लाइक साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि अगर हमारे पावर सिस्टम की information, it can go, if it goes towards unauthorized hand, it will, they can cause a damage to the power system, which will eventually have a burden on our economy. ठीक है? तो इसीलिए एक cyber security of these, electrical power system is very much important, and it is nowadays a very much trending topic. ठीक, तो होता क्या है, कुछ लाइक से कि ये एक ग्रिड है, ठीक, इस पे से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, दीज आर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसके अंदर पावर, इसमें हाउसेज है, ठीक, यहाँ पे सोलर डीईआरस मौजूद हैं जो इलेक्ट्रिसिटी हाउसेस को भी दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी दे रहे हैं। देयर आर कॉमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है, and also these are also connected to wind, this is also connected to energy storages, यहाँ से एनर्जी स्टोरेज, विंड एनर्जी स्टोरेज हाउसेस को भी दे रहे हैं, ठीक है, ये हाउसेस को दे रहे हैं। तो दिस इज ऑल यू कैन से हियर, दिस इज द फिजिकल टर्म। अब इन फिजिकल टर्म्स में क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, किस टाइम जा रही है, ऑल दीज बिल एंड अकाउंटिंग ऑफ दिस, इट इज डन ऑन द साइबर स्पेस, इन द साइबर स्पेस। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करा गया है, साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है, साइबर हो गया, इट्स ऑल ऑन सॉफ्टवेयर, फिजिकल सिस्टम विच इज physically is available. So what is it is, it is the integration integration of cyber system and physical system, ठीक है, जिससे नया टर्म डेवलप होता है सीपीएस, ठीक, ओके। अब इसके डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, साइब कंपोनेंट्स ऑफ सीपी, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जो कि एक्चुएटर्स हैं, अब क्या होगा, और सेंसर्स हैं, and plants, various plants type. Okay, these are the, what are they? They are the physical system. अब इनको कंट्रोल कौन करता है? They are controlled by cyber systems like communication, ठीक है, नेटवर्क है, प्रोटोकॉल्स हैं, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सब चीजें जो है इसको क्या करती हैं? दीज आर ऑल साइबर बेस्ड बट दे कंट्रोल द फिजिकल सिस्टम। अब इसमें आसानी ये होती है, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है इट इज वेरी स्विफ्ट, ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले स्विफ्ट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, आप कितने भी किलोमीटर दूर आप जो है इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, लाइक से कोई एक्चुएटर बंद होना है तो यू कैन कंट्रोल दैट एक्चुएटर बाय यूजिंग इंटरनेट इंटेलिजेंट डिवाइसेस, ओके, लाइक दैट। और इससे एक और चीज होती है, सिक्योरिटी, एफिशिएंट हो जाता है सिस्टम। एफिशिएंट कैसे?
कोई भी फॉल्ट अगर होता है उसको क्लोज करने का जो टाइम होता है वो लेस हो जाता है, बिकॉज इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय अ सॉफ्टवेयर। एफिशिएंट एंड सेफ भी रहता है। एंड सेफ कैसे रहता है कि इन ह्यूमन इंटरेक्शन लेस हो जाता है, इट ऑल कंट्रोल्ड बाय द एक्चुएट सॉफ्टवेयर। ओके, ऑटोमेशन हो जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ जाती है? लाइक से यू हैव अ स्मार्ट मीटर, ठीक है। अगर स्मार्ट मीटर जो नहीं हो, ओके, स्मार्ट मीटर है, थॉट यू हैव ऑल्सो सोलर ऑन योर हाउस। अब आपके पास रोजाना जो है कुछ 10 to 12 किलोवाट आवर आपकी एनर्जी रह जाती है। तो यू कैन, by using that smart meter, you can sell back to the grid. Okay, अगर ये मीटर स्मार्ट नहीं होता, it doesn't have a bi-directional capabilities, then it won't be transferring energy from your house to the grid. So that's why this digitalization or smart grid helps in the flexibility और coordinated operation ज्यादा आसानी से हो जाते हैं। अब जिस तरीके से एडवांटेजेस हैं, जो से ऑफ कोर्स देयर विल बी सेवरल डिसएडवांटेजेस। So what are the disadvantages? There are threats due to cyber attack. अब पहले सिस्टम जो है ऑफलाइन रहता था, ऑटोमेटेड नहीं था, साइबर इंटरेक्शन जीरो था, तो साइबर अटैक्स के चांसेस भी मिनिमल थे। बट नाउ nowadays all things are digitalized, so of course the cyber attacks chances is high. तो हमारा सिस्टम, it should not only be electrically resilient, it should also be a cyber attack resilience also. अब इशू रहता है लेटेंसी। लाइक से कि मान लीजिए कोई होस्ट कंट्रोलर ने एक सिग्नल भेजा एक्चुएटर को टू परफॉर्म any designated operation. If if the communication get disturbed, or if there is any delay in the communication, so this actuator won't be performing that action at the required time. तो इससे क्या होगा, जो चीज हम आसानी थी, तो कम्युनिकेशन डिलेज होने की वजह से there will be problems arising at that point. So that's why we have to be, there should not be any communication latency. Another thing is there, which is also similar to the communication delay, which is packet dropouts. ओके, क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे इंटरनेट के ऊपर, इट गोज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है। अब क्या होता है, एक पूरी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिफरेंट पैकेट्स। एक भी पैकेट मिस करेगा तो इंफॉर्मेशन पूरी रिले नहीं होगी। तो कभी कभी क्या होते हैं, जब when a communication has been flowing from one point to another, there due to channel medium there are some communication error की वजह से पैकेट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती, ठीक। और there are several examples, like recently एक पावर ग्रिड in Ukraine has been hacked। in 2015 में हैक हो गया था, ठीक है। रशियन पावर ग्रिड हुआ था 2019 में, रशियन पावर ग्रिड। ओके, so there are in history there are several incidents which lead us to the fact that our system, in order to become more resilient, it should be electrically resilient and also cyber based. Cyber resiliency should be there. Both these things are should be in our system. If it any one of thing is missing, then system is not secure and safe. So how do we define
cyber resilience. How do we define cyber resilience? It is actually what we say as ability to mitigate damage, and damage means damage to system, any processes. ठीक है, जो भी डैमेज हुआ है उसको मिटिगेट करें एंड कैरी ऑन द द सिस्टम्स और डेटा विच हैज बीन कॉम्प्रोमाइज. इससे क्या होता है कि जो भी अटैक हुआ है, जो भी डैमेजेस हुए हैं सिस्टम को, उसको मिटिगेट करें यानी कम करें, और जो काम चल रहा है, जो डेटा कहीं जाना है, कैरी ऑन करें उस मेथड को विच हैव बीन कॉम्प्रोमाइज. तो इसको क्या कहते हैं? रेजिलेंसी. ठीक. ठीक है, तो these you can say if some system has that property, then we can say it is a cyber resilient system. Now, अब next topic है हमारा regarding the all these thing here. Here is that demand side management. What is demand side मैनेजमेंट? ठीक है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा? पीएमयू का प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाई इट इज नेसेसरी. ओके, लाइक दिस. देन वी हैव डिस्कस अबाउट what we have discussed about the cyber resiliency. Why should the the system should be our system should be uh, cyber resilient or like that. Now coming to what the thing here is that demand side management. अब डिमांड साइड मैनेजमेंट में क्या होता है कि कस्टमर्स क्या यू नो based on customer consumption pattern. ठीक है, pattern based on the consumption electricity consumption pattern, there is an alternation in the load shape. Like say कि कोई एक इस तरीके का लोड डिमांड प्रोफाइल है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा जो है पीक लोड आ रहा है, यहाँ पे ऑफ पीक एरिया, ये अगेन एक पीक है, ये ऑफ पीक है. तो हम ये देख सकते हैं कि इसके बेस पे जो अल्टरेशन कर सकते हैं कि अब हमें लाइक से कि बेस्ड ऑन द हेयर, अब ये जो है एनर्जी मान लीजिए कन्वेंशनल से आ रही है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से आ रही है, तो हम क्या करेंगे? हमको पता है एवरी डे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी अ पीक. तो हम उस टाइम पे एनर्जी हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड करा सकते हैं इस तरीके से. और प्लस हम बेस्ड ऑन दैट हम कस्टमर को बता सकते हैं कि जब पीक लोड होता है तो उसके इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ अलग होते हैं, और जो ऑफ पीक टाइम होता है उसके टैरिफ अलग होते हैं. तो हम कह सकते हैं वी कैन सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू कस्टमर कि इफ यू आर गोइंग to be consume electricity in off peak hours, then it will be like for example, I will give you example for a better understanding, like electric vehicles. ठीक. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है? इसमें तीन तरह की चार्जिंग होती है. एक होती है अनकंट्रोल. अनकंट्रोल का चार्जिंग का क्या मतलब है? whenever you need to have a charge, you go in and plug it in your system and charge your vehicle. ठीक है. एक होता है पीक वैली. अब इसमें क्या होता है? इसमें कस्टमर को अगर जरूरत होती है, इफ ही वांट टू चार्ज इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, देन ही विल सी द टाइम ऑफ यूसेज.
टाइम ऑफ यूसेज क्या होता है जनरली इन इन फॉरेन वर्ल्ड व्हाट दे डू दे गिव टाइम ऑफ यूसेज कि अगर आप इस टाइम पे इस्तेमाल करोगे तो ये रेट रहेगा दिस टाइम लाइक और ये टाइम ऑफ यूसेज बनता कैसे ये बनता लो डिमांड प्रोफाइल से ठीक है इस तरीके से लाइक ठीक है मान लीजिए कोई ये क्या ये है ऑफ पीक एरिया टाइम्स है ठीक और ये पीक टाइम्स है अब कोई इस टाइम पे क्या होता है पीक टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ होता है इट इज हायर रेट इन कंपैरिजन टू द ऑफ पीक टाइम ठीक है ऑफ टैरिफ जो है पीक टाइम से कम होता है ठीक तो अब आप अगर if you are going to charge your vehicle in the peak time then your charging cost will be much higher in comparison to the charging your vehicle in off peak time तो इससे क्या पता चलता है इससे कि आप the controller exactly the distribution network operator it will guide the AV user that they should charge their vehicle in off peak value in off peak time because it will help in two things one in minimization of charging cost of electric vehicle and also minimization of congestion on the grid ठीक है इन दोनों चीजों में इट विल हेल्प इट आउट ठीक है अब एक होता है एक और चार्जिंग स्ट्रेटजी है विच इज डायनामिक चार्जिंग स्ट्रेटजी अब इसमें क्या होता है इसमें डिपेंड क्या करता है कि इट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के इंटीग्रेशन के बेस पे क्या होता है लेट्स से दिस इज ग्रिड दिस इज डीएनओ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑपरेटर इंफॉर्मेशन बाई डायरेक्शनल होती है पावर फ्लो इधर उधर जा सकता है ये है इट हैज द लेट्स से दिस इज सोलर और लेट्स से दीज आर हाउसेस कन्वेंशनल लोड जिसको हम कहेंगे एंड दिस इज ईवी एग्रीगेटर ठीक है तो व्हाट इट विल डू हियर अब क्या करेगा बेस्ड ऑन द लोड एंड जनरेशन एंड सोलर जनरेशन इट विल गाइड द ईवी एग्रीगेटर्स कि तुम किस टाइम पे चार्ज करो ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द लाइक से इफ देयर इज सनी डे तो सनलाइट ज्यादा होगी सनलाइट जब ज्यादा होगी तो सोलर प्रोडक्शन विल बी हायर so at that time like say around 12 p.m generally 12 a.m generally at this time peak load is happening because industries are consuming energy all the every household consuming energy so it is generally a peak time but if the solar generation is extra because so del p we can say that p load minus p generation okay p load is actually the load which it will supply to them or we can I will make it different मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ डेल पी सोलर ओके प्लस पी जनरेशन माइनस पी लोड ठीक है अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है व्हाट इट सिग्निफाइज वी हैव अ पॉजिटिव जनरेशन एक्स्ट्रा एक्सेस एनर्जी अवेलेबल ऑफ कोर्स पी जनरेशन से तो नहीं होगी क्योंकि सोलर ही वेरी करेगा इसके अंदर जनरेशन इज लाइक अ कांस्टेंट फॉर एनी एरिया तो बेस्ड ऑन दैट इट विल गाइड द एग्रीगेटर्स ईवी एग्रीगेटर्स की नेक्स्ट 1 आवर के लिए द कॉस्ट ऑफ चार्जिंग विल बी लो यू कैन चार्ज so it all based on internet of thing and this information generally relied by the ऐप के बेस में आपको पता चल जाएगा कि अब ओके नेक्स्ट आवर्स में चार्जिंग कॉस्ट कम है तो आई कैन चार्ज इफ आई हैव टू गो तो दिस इज हाउ अ डिमांड साइड मैनेजमेंट इज डन ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिमांड साइड मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज द यूज ऑफ renewable energy sources ठीक ऑफ कोर्स वही वाली बात कि सोलर का जनरेशन ज्यादा इस्तेमाल होगा सेकंड इससे होगा क्या इट विल इकोनॉमिक बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करेगा एक्चुअली
अब डिमांड साइड मैनेजमेंट करने से इकोनॉमिक बेनिफिट किस किसको हो रहा है? एक तो एक ईवी यूजर्स को हो रहा है, और ग्रिड ऑपरेटर्स, ग्रिड को भी हो रहा है। रीजन क्यों है ग्रिड को? क्योंकि अगर डिमांड साइड मैनेजमेंट नहीं हुआ, ठीक है, लेट्स से, और हर कोई, एवरी ईवी यूजर इज चार्जिंग इट्स व्हीकल एट द पीक टाइम, तो जब वो पीक लोड होगा उस पर एक एक्स्ट्रा पीक डेवलप हो जाएगी, विच इज ड्यू टू द ईवी चार्जिंग। तो उसकी वजह से व्हाट विल हैपन, द ग्रिड हैव टू बी एक्स्ट्रा जनरेशनल यूनिट्स लगानी पड़ेंगी, इट विल इनकर अ वेरी इकोनॉमिक कॉस्ट। तो डिमांड साइड मैनेजमेंट करने से व्हाट इट इज गोइंग टू गिव अस, इट गोइंग टू गिव अस एन इकोनॉमिक बेनिफिट बाय शिफ्टिंग द लोड पैटर्न ऑफ द यूजर्स। और इससे एक और चीज है, मिनिमाइजिंग द पावर बाइंग फ्रॉम द ग्रिड। ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो भी पावर होती है हमको ग्रिड से लेने में कम पावर चाहिए होगी। फिर उससे, उसके पीछे रीजन क्या है? उसका रीजन रीजन ये है कि जो ग्रिड से पावर हम बाय करते हैं, इट कम्स एट अ हायर प्राइस इन कंपैरिजन टू द रिन्यूएबल एनर्जी sources. Another thing here is that reduction in पीक लोड। ठीक है। अब पीक लोड में रिडक्शन हो, अब क्या होगा कि मान लो, लेट्स से दिस इज एनी लोड, एनी लोड डिमांड। अब जब हम डिमांड साइड मैनेजमेंट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो पीक टाइम में तो वही फॉलो करेगा। ठीक है। कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये वाली लोड है, इट इज लोड प्लस ईवी लोड। ठीक है। ईवी चार्जिंग लोड। और ये जो लोड है, दिस इज कन्वेंशनल लोड। ठीक है। ये वाला कन्वेंशनल। अब तुम देख सकते हो इससे, अगर डिमांड साइड मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमारा नया पीक नहीं आ रहा है कोई भी। रिडक्शन इन पीक का मतलब यही है ना कि एक नई पीक ऐड नहीं हो रही है यहाँ पे। समझे? एक नई पीक यहाँ पे ऐड नहीं हो रही। अदरवाइज अगर हम ये डिमांड साइड मैनेजमेंट नहीं करते, तो देयर विल बी अ न्यू पीक यहाँ पे ऐड हो जाती है। ठीक। तो इससे हम ये समझ सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे क्या होता है, एक नई पीक ऐड हो जाती है। इस नई पीक को कैटर करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जनरेशन यूनिट्स लगाते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें एक और चीज है, हो सकता है ये हम, इफ वी कैन प्रोवाइड इट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, बट द थिंग इज दैट कि ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि दिस पीक, एट दिस पीक द रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन विल बी हायर। So, based on the demand side management, what we can do here is we can manage the energy. Okay. अब reason why are we going for a demand side management? Because we know that in the last 10 to 20 years, due to digitalization, every device needs to be recharged. The number of energy consuming devices are increasing. ठीक है। लास्ट 10 to 20 ईयर्स में यही हो रहा है कि कंज्यूमिंग डिवाइसेस इंक्रीज कर रहे हैं और एनर्जी डिमांड इंक्रीज कर रहा है। अब उसको फुलफिल करने के लिए वी 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 आर गोइंग इनटू दिस डिमांड साइड मैनेजमेंट। इससे क्या होता है, एक और रीजन है, ग्लोबल कंसर्न है, ग्लोबल वार्मिंग का। अगर हम फॉसिल फ्यूल बेस से अगर हम इसको, इफ यू वांट टू सेटिस्फाई दिस लोड डिमांड, then it will be very difficult to control the greenhouse gaseous emissions also। ठीक है। इससे डिमांड साइड मैनेजमेंट करने से व्हाट इट इज गोइंग टू गिव, इट इज गोइंग टू गिव, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द penetration of
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है। अब इसमें एक इसका एक आर्किटेक्चर है जिसको हम कह सकते हैं, मैंने बता तो रखा है ये किस तरीके से आर्किटेक्चर बनाया था। एक होता है ये है सेंट्रल सर्वर। अब क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे। ठीक है। फिर ये डिफरेंट डिसेंट्रलाइज कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, सब डिसेंट्रलाइज सर्वर्स हैं। डिसेंट्रलाइज सर्वर्स, और वी कैन से सिस्टम्स, कुछ भी कह सकते हैं। इनसे क्या है कनेक्टेड है, क्या चीज, सोलर है, विंड है, हाउसेज है, ईवीज है, हर चीज कनेक्टेड है, सेम है, हर तरह का लोड कनेक्टेड, एवरी टाइप ऑफ अ लोड यू हैव, दीज आर ऑल कनेक्टेड। तो बीज ऑन दीज डिसेंट्रलाइज, ये एरिया डिवाइड करके दीज आर गेटिंग एरिया डिवाइडेड, इस एरिया का डिसेंट्रलाइज, ये इस तरीके से। अब डिसेंट्रलाइज करने करके ही हम जो है वी कैन गो फॉर अ डिमांड साइड मैनेजमेंट एवरी एरिया पे। फिर वही मैंने बताया ना अभी कि डीएनओ करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑपरेटर्स होंगे यहाँ पे, वो डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस एनर्जी अवेलेबल, बेस्ड ऑन दैट दे विल टेक अ डिसीजन। दिस इज, यू कैन से, आर्किटेक्चर ऑफ अ डिसेंट्रलाइज। नाउ देयर आर, ओके, अब इसमें क्या है, दो तरीके के हैं, सिंगल ऑब्जेक्टिव है और एक है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, मल्टी ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं, मल्टी ऑब्जेक्टिव। सिंगल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आई विल राइट इट डाउन हियर, फ्लेक्सिबल devices are shifted to bring the actual load to bring the actual load curve to bring the actual load curve as close, just a second, I am getting disconnected. Just a second, it is, am I audible? I think I have been disconnected due to some internet issue. So what will I do here? Close to
the utility or consumer
So, coming to this question, what are the different DSM strategies? So, first है P reduction, B flexible load, flexible load, C load growth, and D is all of the above. Okay, so try to answer this in the chat box. So, the correct answer to this here is P. What are the different DSM strategies? So, peak load reduction, flexible load, and load growth. So, all of the above is the correct answer to this. So, now the next question here is which of the following statements are correct? Okay, first, PV array provides inertia and active power support. B. PV array provides inertia but not active power support. C. C. PV array provides active power support but no inertia. D. None of these. So, so for this, we know that PV array supports active power but not inertia. So the third option is the correct one. Okay.
Now, another question: what is the limitation of PMU placement in the system? Okay, first time, economic constraints. B, infrastructure constraints. C, either of them. D, both of. Okay, so answer this. So the answer to this here is the limitation of PMU placement is economic constraints and also the infrastructure constraints. So both of them is the correct answer. Okay. Now coming to another topic, which is a very much virtual inertia and ancillary support. Okay. So actually, as we know that due to the integration of renewable energy sources, there is high uncertainty in the system, and for that high uncertainty, you know, we have been doing we have been doing various things. We have been doing various things like we have developed the control strategies, or also, like just we have learned in this lecture right now in just the beginning that PMU placement is required. Why PMU placement is required? Because due to the uncertainty and intermittency of the renewable energy sources, we have to, okay, we have to, for due to intermittency, we have to estimate the state of the power system, and for that estimation, we need the and for that estimation, we need okay for that estimation we need the data from the measurement devices, and for measurement devices, we have placed the that the PMUs. Okay, now why there is. So what happened here is that in this ancillary support, we are talking about the frequency support. Okay, frequency support. Okay, what does it represent? देखो, what frequency in general represent? It represent actually it gives an indication of real time based
बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, यही तो बताता है, सप्लाई एंड डिमांड. If we have a declining frequency, let's say if we have a declining frequency, it will show that there is more demand than supply, more demand than supply. ठीक है. और rising frequency क्या बताता है? Rising frequency will tell you about the system has more supply than demand. Okay. So actually frequency support क्या करता है? Frequency support will help in what it will do. Frequency support will help in ensuring that system is stable. System stable, right? For which condition? For any normal condition maybe, and for any contingency condition. Okay, if there is any outages, if there anything happening, for that condition, the system should be stable. ठीक है. तो कंट्रोलिंग फ्रीक्वेंसीज को, तो हम क्या कहेंगे फिर, हम इसको कंट्रोलिंग फ्रीक्वेंसीज we can break it down in various parts, generally in 4 stages. First is inertial response, then primary frequency response, then secondary, and then tertiary. Okay, so operational flexibility. Why we need the flexibility in the controlling frequency? Because in real life there is at various times something like that, the demand will be higher than supply, or sometime what will happen, supply will be higher than demand, like in rainy conditions nowadays, because in rainy conditions the ACs get off, all these things happen, the supply is very much higher than demand, you can see. But in extreme weather condition, like in high winters and high summers, the demand gets increased due to due to switching on the various air condition units. Then at that time, the supply gets reduced. So if the reliability support is not there, what will happen here is that large frequency deviations will happen. Large frequency deviation will happen, and it will result in the system damage. Okay, it will result in the system damage. It will result in the system damage. Okay, and what happens here is that it also will lead to like loss in जनरेशन, लोड शेडिंग होगी. लोड शेडिंग होती क्या है एग्जैक्टली? लोड शेडिंग क्या होती है कि जब डिमांड ज्यादा हो जाती है सप्लाई से, तो व्हाट हैपन हियर इज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑपरेटर ट्राई टू कट डाउन द लोड from some area so that the demand and supply mismatch does not happen. Yes, that is over. Because in this thing is there, the questions are not so much, because it all thing है ना, theoretical concept ज्यादा है इसके अंदर. Why are we placing PMU, all these things, तो questions बहुत ज्यादा नहीं थे. I have tried to give as many as you can. Okay, so एक last topic रह गया था, which is regarding the virtual inertia or like that. तो क्या होता है ना, लगातार पढ़ाते पढ़ाते it become monotonous, so I put question in between, that's why. Third is the interconnection island. Okay. फिर एक और चीज होती है, सिस्टम एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाता है, एट रिस्क हो जाता है. रिलायबिलिटी
gets reduced. ओके, कब रिड्यूस हो जाएगी? अगर ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन हैपन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. ओके, लॉन्गर ड्यूरेशन हैपन हो रहेगा. अब नाउ कमिंग टू द वेरियस एलिमेंट विच वी डिस्कस. तो फर्स्ट इज इनर्शिया. तो इसका क्या मतलब होता है? इनर्शिया बेस्ड सपोर्ट. ये एक्चुअली, let me define it here. So it is stored rotating energy in a machine. Okay, अब इसको जनरली इनर्शियल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा जाता है किससे? सिंक्रोनस मशीन से, बिकॉज दे हैव अ लार्ज इनर्शिया. Or through it can also be provided by the controlling RES generally, but more probably it will provided by the synchronous machines. फिर आता है, now come the secondary part which is primary frequency control. अब इसमें क्या होता है? it is generally a automatic and autonomous. What it is? It is automatic and autonomous, यानी खुद ब खुद एक्ट करेगा. रिस्पॉन्स किसको देगा? रिस्पॉन्स टू द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन. ओके, by through a generator droop control parameter which we have studied in the last. और ये किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है? It provided through load frequency sensing. ठीक है, it can be provided through the generator governor controller. Okay, generator governor controller, or no communication in infrastructure is required. और ये जब प्रोवाइड होता है, it can also lead to a automatic load shedding. ओके, फिर आता है सेकेंडरी और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल. ओके, ये क्या है? इट इज अ सर्विस that returns frequency to nominal value and minimizes the unscheduled transient power flows from neighboring area of control. Neighboring control area due to the power imbalance. Due to power imbalance की वजह से कोई ट्रांजिएंट्स नहीं आए, तो उसके लिए हम लगाते हैं सेकेंडरी कंट्रोल. ओके, ठीक है. और ये जो है टाइप ऑफ सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं? दे आर जनरली सेंट्रलाइज होते हैं विद इन कंट्रोल सेंटर्स. ओके, थ्रू एजी. अब क्या होता है कि जनरली इनर्शिया जो है डिक्रीज होने की वजह से सिस्टम की, उसको कंपनसेट करने के लिए एक वर्चुअल इनर्शिया हम लोग यूटिलाइज किया जाता है. अब वर्चुअल इनर्शिया कैसे दिया जाता है? वर्चुअल इनर्शिया दिया जाता है थ्रू implementing the control function on the power electronic interfaced REs.
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। और इसका जो मेन सोर्स होता है द स्टोर्ड एनर्जी इन द डीसी लिंक ऑफ द आरईएस पावर, और इसको इंजेक्ट करा जाता है थ्रू द एसी साइड अकॉर्डिंग टू द डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्चुअल इनर्शिया कंट्रोल। अब हम इसमें मैं दिखाता हूं कि वर्चुअल इनर्शिया के जो सोर्सेज हैं फॉर एंसिलरी सपोर्ट कौन कौन से हैं। तो आई विल राइट इट डाउन हियर, द जनरेशन type, then what type of inertia or which type of power control are they going. So first है, पहला है conventional synchronous generation। ये किस टाइप का ये inertia प्रोवाइड करता है? It also provide active power control also provide। ओके, एक हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में DFI, विंड टर्बाइन, डबली फेड induction generator, wind turbine। It also provided the inertial, it also provided the virtual। Okay, now another here is PMSG। लास्ट टाइम हमने इसको पढ़ा था PMSG विंड टर्बाइन का। इट ऑल्सो प्रोवाइड इनर्शियल सपोर्ट एंड ऑल्सो एक्टिव पावर कंट्रोल। फिर आता है पीवी एरे। It does not provide inertia support but it does provide active power control। अभी इसका हमने जस्ट अभी इसके बेस हमने क्वेश्चन करा था जिसमें ये था कि डस पीवी एरे प्रोवाइड एनी इनर्शिया कांस्टेंट इनर्शिया सपोर्ट और नॉट, तो वो क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा। अनदर हियर इज दैट बैटरी स्टोरेज, okay, it also provide inertia support and also active power support। Then another, okay, so these are all the various type of sources which can provide the inertia, virtual inertia and the, okay। अब इसमें एक और चीज है कि आरईएस से जो हम वर्चुअल इनर्शिया और एनी फ्रीक्वेंसी सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उनकी लिमिटेशंस हैं कुछ। देयर आर सेवरल लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ आरईएस क्या है? पॉसिबिलिटी दैट इट विल नॉट प्रोवाइड, just a second, possibility that no power generation from RES during frequency event। ओके, फ्रीक्वेंसी सपोर्ट की इवेंट पे पावर जनरेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। अनदर लिमिटेशन ऑफ RES इन फ्रीक्वेंसी सपोर्ट इज दैट अनइकोनॉमिकल to operate for frequency support, ठीक। Another thing, so these are some of the the limitations of these things of the energy support। So I think today's session regarding everything I have give you a brief idea about this। So various questions are there. I will provide these, the PDF of this. You don't need to worry about that. Okay. So basically what we have done here in this, we have gone on from the PMU placement. Then after PMU placement, we talked about the resiliency of the network. Then after that, yes, Ravinder. Then after that, we talked about the demand side management, how we can manage various demand side response and demand response analysis we can do by shaping the loads
load demand of consumers. Or we talked about two objective here. Single objective, we talked about how in that single objective only one either utility or consumer can objectives can be minimized. And then we talked about multi-objective, and we can see from the simulation result that in multi-objective the peak percentage peak reduction is higher. Okay, I hope that you have you have gone through through your lectures, and you have got a good revision of that. So basically, if you want to ask anything, you can write in a chat box, or I will wait for some time. Then you can leave. Sorry for that inter network connection disconnections, because there has been rain, continuous rains happening in my area, so internet is something a very dodgy one, so it's not reliable. Still, I'm connecting through mobile. So if you have any question regarding this, you can ask me. Otherwise, we can leave. I will wait for a minute. Actually, I think you are good to go. If you don't have any questions about this, okay, then we will meet next week. Thank you for coming. So now coming back to this, I have to read this because the recording was stopped. So I will re-explain that. After that, what we are going here, what I explained over there is the single objective and a multi-objective. The flexible devices are shifted to bring the actual curve close to utility and consumer design objective low consumption to provide the benefit to utility and users. मल्टी ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जो बेनिफिट होता है इट इज गिवन टू बोथ यूटिलिटी एंड यूजर. ओके, actually at that time, due to internet interruption, recording was stopped, so I will re-explain that. Okay. तो अब इसमें सिंगल ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होता है इट इज एक्चुअल लोड डिमांड माइनस यूटिलिटी यूजर स्पेसिफाइड डिमांड, आइदर फॉर अ यूटिलिटी फॉर अ यूजर. बट फॉर अ मल्टी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक्चुअल लोड डिमांड माइनस 0.5 टाइम यूटिलिटी डिमांड माइनस 0.5 टाइम यूजर डिजायर लोड डिमांड. अब इसका 0.5 का मतलब क्या है, इट इज इसको इसलिए रखा गया है टू गिव द इक्वल वेटेज. इक्वल वेटेज हमने बोथ यूटिलिटी और यूजर को दिया है. ठीक है. तो एंड नाउ कमिंग टू द कंस्ट्रेंट. अब इसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं. व्हाट आर दीज कंस्ट्रेंट आर? तो कंस्ट्रेंट क्या है? फर्स्ट है नंबर ऑफ डिवाइसेस. नंबर ऑफ डिवाइसेस shifted cannot be नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, बिल्कुल सही. अनदर थिंग इज नंबर ऑफ डिवाइसेस शिफ्टेड फ्रॉम अ टाइम स्टैम्प. ठीक है, नंबर ऑफ
डिवाइसेस जिनको शिफ्ट किया जा रहा है, नंबर ऑफ डिवाइसेस विच आर शिफ्टेड, ठीक है, वो नंबर ऑफ डिवाइसेस शुड कैन नॉट बी मोर देन number of devices available for control at that time, ठीक है, ये एक चीज हो गई। ठीक है, ये एक चीज, ये सारे कंस्ट्रेंट जो हैं हमको अपनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में लगाने होंगे। अब नाउ आई विल शो यू एक ऑब्जेक्टिव, अब एक सिमुलेशन रिजल्ट्स ये सब लगाया गया है किसपे, एक कॉमर्शियल एरिया पर अगर हम इसे लगाएं तो I will share it some result which you have seen in your lectures also. I will explain those. तो हम क्या कर सकते हैं, एक I will draw a graph over here. On the right hand side, it is percentage P reduction. ठीक, अब let's say कि ग्रीन से हम क्या लिखेंगे, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो यूटिलिटी को मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, और कंज्यूमर भी इसको लेट मी राइट इट बाई, आई विल ड्रॉ इट बाई, दिस इज यूजर और वी कैन से कंज्यूमर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलिटी ड्रिवन, यूटिलिटी से जब हम ड्रिवन करेंगे फॉर कॉमर्शियल, अगर हम एक टेस्ट केस के रिजल्ट आई विल एक्सप्लेनिंग हियर, तो ये एक बार ग्राफ है, इसमें ये क्या है, एक कॉमर्शियल है और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया पे लगाया था। हमने क्या लगाया इसमें, डिमांड साइड मैनेजमेंट, तो उससे हमारा जो परसेंटेज रिडक्शन हुआ है 6.45 हुआ है और इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ है 5.03। ठीक, नाउ लेट इट ड्रॉ फॉर द कंज्यूमर। अब अगर हम फॉर कमर्शियल एक कंज्यूमर को कितना, कमर्शियल एरिया में एक कंज्यूमर को कितना पीक रिडक्शन मिलेगा, इट इज 6.14, ओके, एंड फॉर इंडस्ट्रियल एरिया the reduction is 12.92, okay, this is for a user, okay, and this is for utility, utility को मैंने ग्रीन से ड्रॉ करा है एंड फॉर यूजर आई हैव ड्रॉन फॉर द ब्लू। नाउ आई विल ड्रॉ अ हाइब्रिड सॉरी मल्टी ऑब्जेक्टिव, जिसमें मल्टी ऑब्जेक्टिव मीन्स हियर we are going for this this DSM where we have given equal weightage. So I will draw with red color, and for commercial area, this is for commercial area and this is for industrial area. ठीक, for commercial area the percentage peak reduction in hybrid case is 10.56 and for industrial 12.27. So इससे what it signifies? It signifies that it is better to use a multi-objective where both where both utility and consumers will have a economic benefit. So this simulation results also tells you about that, okay. So what we conclude here from here is this, let me write it down, the conclusion. DSM, what is DSM? Demand side management. It has the potential to provide many benefits to
smart grid, particularly at डिस्ट्रीब्यूशन लेवल. ठीक है, क्योंकि सारे कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन साइट पे कनेक्टेड होते हैं एट द डिस्ट्रीब्यूशन लेवल. ओके. Another objective, or we can conclude that load shifting DSM is more advantageous and also multi-objective. Multi-objective provide higher peak reduction. ये तुम देख भी सकते हो इसमें कि यहाँ पे 10.56 10.56 peak reduction was not given by neither by utility nor by user base objective. So it will give a higher peak reduction. इसमें एक और चीज है, if we use battery to this, sorry, another thing, another conclusion we can say here, with battery energy storage, it will also help in the reduction of peak load. Okay, so this is all about, regarding all those things, the tutorial lecture about everything, demand side management. First, we started from PMU. Why are we going to play the PMU? Then after that, we talked about the resiliency. Then we talked about so what happens here in the demand response is that what happens here is that in the demand response process, ISO determines the preferred demand value, volume, and time duration that is offered. Then aggregator receives the load data, and then aggregator select the consumer for their participation. And after that, accounting the number of interested consumers agree with the proposed data, then it optimizes the total load demand. And it is the demand response applicability for there are for different customers, like for industrial customer, high energy consumers with peak load of few megawatt loads have a critical temporal dependencies. The DR program should be able to should capable to monitor it. Okay, so there are demand response will be for different customers for the different demand response. For commercial, the main power consuming equipment are heating, ventilation, and air conditioning. And the reduction of power demand consumption can be achieved by the adoption of energy efficient building technology or the control of the building energy consumption behavior through a price elastic power demand. Okay. So for different customers, there are like for the residential, what happened here is that they are generally termed as the home energy management system, HEMS. And for residential, it is more complicated because there are different types of demand, like because there are different appliances like refrigerator, AC, washing machine, electric vehicle. So the demand program, if we are going to plan it, they should provide the plenty of incentives. Now, what happens in the requirement for the demand is this: the communication is first is the quality of service. Then it should be interoperability, and it can be scalable and flexible, and there must be a
security aspect regarding to this. Another thing is that objectives. So these are various objectives of the demand optimization objectives like minimization of electrical cost, maximization of solar social welfare, and the aggregators power consumption should be minimized, and also the electricity cost and aggregators power consumption also minimized, and there are like this. These are single objectives. These are multiple objective in which two objectives are okay, are combined. Now comes the classification of the DI program. These are classified based on the price, based on the load, based on the control strategy. If they are centralized control, they are known as centralized DI strategy. Then decentralized, and based on the price, it is divided into dynamic or incentive and penalty based. Like dynamic will give rise to the time of usage, will give right to the time of usage, and incentive based means like if you they will develop a demand response program based on like if you're going to charge your vehicle in certain time, then we will give incentive like this. Okay, then depending upon the load, if the DR response based on the load like energy of the task which are based on the criticality of the operation. Okay, like I have said, in the centralized, all these kind of things are controlled by a central server. In a decentralized manner, what happened here is that the controlling of operations is in a decentralized way. Okay, uh, now it's time for the questions. Okay, so question number one: which buses are prioritized for for monitoring in power system? तो फर्स्ट है जनरेटर बस. ओके, देन टाई लाइन बस, देन सी all of these, D none of these. Okay, so you have to answer this. As I have told about, the generator buses and tie line buses both are critical, so that's why we are going to use both. Okay, so all of these is the correct answer. Next question is, which of the following is the disadvantage of cyber physical system? First, cyber attacks. Second, network congestion. C, malicious control effects. A, B, C, D, all of these. Okay, so answer this.
So we can say here is that which of the following is the disadvantages of cyber physical system? Okay. First is the cyber attack, then network congestion, malicious control effect, and all of these. So, if any cyber attack, cyber physical system, cyber attacks threat is always there. And due to cyber attack, what happened here is this: the control if control actions get affected, and yes, 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 it will be the correct answer. D. So based on that network congestion, so all these things will correlate to the this one. Okay, all of these. Now coming to the next question here, which is, let me write it down for you, which is not a benefit of cyber physical system. Okay, so first, two-way flow of information. Okay, B, communication latency. C, improved safety. And D, coordinated operation. Okay, so the answer to this, write it down. Okay, so which is not a physical benefit of a cyber physical system. So one of the major benefit of a cyber physical system is the two-way flow of information. This is one of the. Then communication latency is not a benefit because it is a disadvantage. So that's why the correct answer here is B. So now the next question here is this. Okay. What is the example of dynamic pricing? Okay. Options here is first incentives, B time of usage, C fixed pricing,
D, none of these. So, okay, net has been disconnected. Am I audible to you? So, which is an example of a dynamic pricing? The example of dynamic pricing is time of usage based incentive fixed price. Incentive is not any dynamic price. It is like you give incentive for buying an electric vehicle. It is a flat base, so it is not a correct. Fixed pricing is also not. Time of usage is a dynamic based on the time they give the cost. So question number 4, what is the purpose of quality? What is the purpose of voltage monitoring in power system? A, to ensure power quality. B, to measure real power. C, to monitor frequency. D, none of the above. Write down the correct option. So here वोल्टेज मॉनिटरिंग का पर्पस क्या होता है? इट इज टू इंश्योर द पावर क्वालिटी. ठीक है, पावर क्वालिटी कैसी है इसको इंश्योर करने में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, so what we are going to do